Yeah, hi Dipen. Hi, good evening. I think you're on mute. Yeah. Good evening. Yeah, hi. So we'll start in 2 minutes, Sure, Rishi. sure. मतलब फ्लो क्या रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही देना है ना? Yeah. So we are live now. So flow is we'll discuss for 10-15 minutes about Very you know. good. Hi Dipen. Yeah, hi. I think you're on mute. Yeah. Yeah. Yeah, hi Dipen. Hi, good evening. I think you're on mute. So there is echo. Yeah. So we'll start in 2 minutes, Rishi. Sure, sure. मतलब फ्लो क्या रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही देना है ना? Yeah. So we are live now. So flow is we'll discuss for 10-15 minutes about. Very good. Yeah, hi. Yeah, hi Dipen. Hi, good evening. I think you're on mute. So there is echo. So we'll start in 2 minutes, Rishi. Sure, sure. मतलब फ्लो क्या रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही देना है ना? Yeah. So we are live now. So flow is we'll discuss for 10-15 minutes about. Very good. Yeah, hi. Yeah, hi Dipen. Hi, good evening. I think you're on mute. So there is echo. We'll start in 2 minutes, Rishi. मतलब फ्लो क्या रहेगा,
I think Shraddha, we can start now. Yeah, so good evening once again. So welcome to Dhan webinar. So this webinar is all about commodities. I'll try to keep it in Hindi because that's what हमारे ज़्यादातर users demand करते हैं. So आज हमारे साथ हैं Mr. Dipen Shah. So welcome Dipen. So Rishi Nathani from MCX will be joining in few minutes. तब तक हम लोग शुरू कर सकते हैं. So just to introduce Dipen is in this industry for almost 25 years. He is once again. So welcome to Dhan webinar. So this webinar is all about commodities. I'll try to keep it in Hindi because that's what हमारे ज़्यादातर users demand करते हैं. So आज हमारे साथ हैं Mr. Dipen Shah. So welcome Dipen. So Rishi Nathani from MCX will be joining in few minutes. तब तक हम लोग शुरू कर सकते हैं. So just to introduce Dipen is in this industry for almost 25 years. Once again, so welcome to Dhan webinar. So I think Dipen, there is a lot of echo happening, right? Echo and there is a repeat of whatever you've just said. That's what. So I think there's some glitch there. Yeah, so there will be recording issue or something. Welcome Dipen. So it's repeating from your end again and again. Joining in few minutes. So just to introduce Dipen is in this industry for almost 25 years. Just a second, I'll ask them to fix it. Just a moment. Welcome to Dhan webinar. I think Dipen, there is a lot of echo happening, right? Echo and there is a repeat of whatever you've just said. That's good. So I think there's some glitch there. Yeah, so there will be recording issue or something. So Dipen, I'll request, can you log off and join again? I think there is some issue at your side. Shraddha, Rishi has joined, so yeah, he's the host now. Okay. Hey, hi Rishi, you can switch on your camera now. Hi. Hi, Rishi. Good evening. Good evening. I think Dipen had some issue with his system. I believe he's rejoining again, so we can start then. Okay. Yes, sir. I have joined again. Can we have Dipen as host, please? Yeah.
Hey Dipen, you have the host access now. Yeah. So Dipen, please switch on your video so that we can start now. Yeah. So Shraddha, let's start then. You have the host access now. Yeah, so Hey Dipen, we can't see you. Dipen, are you there? I think Rishi, we can can you get switch on your started. video, please? Yeah. 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 Hey, hi Rishi, how are you? Hi. Very well. How are you? Doing great as well. Good to see you back for the webinar. So, folks, a little bit of housekeeping before we get started. So, the first 15 minutes we'll spend on the discussions around what's happening in the commodities markets, what's next. And the last 45 minutes of the session are dedicated to resolving your queries regarding the commodity market, which you'll put in the live stream or the chat, or the queries that you've sent across to us on our community, which is at community.dhan.co. So we'll get started for today. Jay, over to you. Yeah, thanks Shraddha. सबका वापस स्वागत है. ये 2023 अभी तक कमोडिटी के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है. हम लोगों ने फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जो पेरोल के नंबर्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल हैं. ये जनवरी मंथ का जो पेरोल का नंबर आया, वो पेरोल का नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस में यहाँ पे जॉब्स बढ़े हैं, तो जिसके कारण मार्केट में अगेन एक रिस्क का माहौल है कि शायद फेड जो रेट हाइक पॉज करने वाला था उसे शायद आगे भी कंटिन्यू रख सकता है, जिसके कारण हम लोगों ने देखा गोल्ड सिल्वर दोनों में करेक्शन देखने को मिला. वी हैव सीन गोल्ड ऑलमोस्ट मेकिंग लाइफ टाइम हाइज. जहाँ तक सिल्वर है वो भी 70,000 क्रॉस हो गया था. तो कल जो सीपीआई या इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं यूएस में, वो बहुत क्रूशियल रहेगा. मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन 6.2% या उसके नीचे रहे. अगर वो नीचे रहता है तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं बुलियन प्राइसेस में, जस्ट बिकॉज ये इंडिकेट करेगा कि फेड अब हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, और जिसके कारण यहाँ पे फिर से गोल्ड सिल्वर या बाकी मेटल्स में बाइंग लौटेगी. अगर कल इन्फ्लेशन नंबर्स हाई रहता है तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पे गोल्ड सिल्वर प्राइसेस या बाकी कमोडिटीज में करेक्शन देखने को मिलेगा. एंड टू डिस्कस मोर ऑन दिस टुडे वी हैव दीपेन विद अस. आई थिंक दीपेन हैज लॉग्ड आउट और हैज. Can you Shraddha please check? Yeah, he's dropped off. He's having some technical issues. We're trying to get him back. ओके. तब तक हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए कि जो जस्ट आई एम. So by the time Dipen is joining in 1 minute, तो ऋषि काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं रेगुलेशन साइड पे भी. सेबी वांट्स टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस. उसके कारण भी यहाँ पे ट्रेडिंग डिफरेंट तरीके से होगा या टाइम एक्सटेंशन की बात चल रही है. So before we get on Dipen to share his expert opinion on commodities, can you some light, Rishi, ki how do you see 2023 as in terms of new products coming in terms of how somebody जो market में नए हैं उनको किस तरह से approach करना चाहिए commodities में? Thanks, Jay. It's always a pleasure to be here.
Before I start, one standard disclaimer: the exchange is not part of any price views or price directions. Whatever you do, please do your own due diligence or consult your registered investment advisor before acting. Now, to answer your point, that 23, as every year, seems, volatility is par for the course nowadays. So commodities, especially, that's true with all the geopolitical uncertainties going on. So commodities should again be going forward. You should see volatility because of various reasons, and because of that, if you're a hedger, it's the best platform to hedge. If you're an investor or trader, then also you should get ample opportunities on either side. Having said that, SEBI has recently allowed multiple contracts, multiple variants on the same contract. So with that, now the path to launching minis has been in principle opened. Now the exchange is analyzing, and thereafter, with careful study, we will approach the regulator for approval for various minis as and where applicable. And hopefully in 23, you should see minis back. So that is one good thing, especially for someone who is new to the market, because with minis, you can take an exposure to the live market with a minimal risk. And because of that, once you hone your skills in your trading or in participating in the market and you feel confident, then you can graduate onwards. So when anyone asks me, what should be the way ahead for a new investor or a new trader, I would always say first is knowledge. Once you've got all the knowledge, then when so theory first, then the practical. But with the practical also, you can choose either to trade in very small mini contracts or buy, call or put and trade. Once you are confident that the call and put, you are being able to handle, then you graduate to minis, and then you graduate to the larger contracts, so that you don't have any major setbacks in your journey of trading. So hopefully, going forward, we should see some good participation in the markets. In the Indian commodity markets on MCX, we have been seeing increased participation, especially in the option segments from various participants. And hopefully going forward with a wider product basket, including the minis and also certain new contracts which we are planning to launch. Today, we relaunched the cotton contract. Earlier, it was 25 bales. Now we made it 48 candy, which is equivalent to 100 bales. So that also has gone off pretty well. We did crossed 100 lots of trading, which is roughly 32 crores, 30 crores plus of volumes. And we expect that this cotton contract will also be doing well going forward. And as as we get approvals for other contracts, we'll keep launching more and more contracts. So the interest of the market will be there, not only in the existing contracts, but also various new contracts that we'll launch. या थैंक्स ऋषि। जैसा आपने सही बताया कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट बहुत दिनों से इन डिमांड है, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं। जैसे आज गोल्ड की ही अगर बात करें तो 58 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो ऑलमोस्ट द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज प्रिटी बिग। तो अगर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा तो जो छोटे पार्टिसिपेंट्स हैं कमोडिटीज में जो एंटर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। वी एक्सपेक्ट कि काफी सारे और पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आएंगे 2023 में। एक इंडेक्स पे ऑप्शंस इज आल्सो ऑन द कार्ड्स, व्हिच लॉट ऑफ आवर यूजर्स एंड क्लाइंट्स आर डिमांडिंग दैट। उस पे क्या थॉट है ऋषि, यू कैन शेयर समथिंग? देखिए, सेबी ने इन प्रिंसिपली अलाउ कर दिया है इंडेक्स ऑन ऑप्शंस ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स। हाउएवर, हमारे इंडेक्स फ्यूचर्स उतना मैच्योर हुआ नहीं है कि उस पर भी ऑप्शंस ले आया जाए, क्योंकि वॉल्यूम्स अभी भी काफी कम है। तो हम यही चाहेंगे कि उसमें थोड़ा वॉल्यूम बढ़े, थोड़ी परिपक्वता आए, उसके बाद हम उस पे ऑप्शंस लाएं तो काम करने में भी मजा आएगा। क्योंकि देखिए, मार्केट हमने देखा है प्रेफर करता है कुछ कैश सेटल्ड ऑप्शंस को, और क्रूड और एनजी का पॉपुलैरिटी इसी कारण से है। तो वैसे ही इंडेक्स पे भी जो ऑप्शंस आएंगे वो कैश सेटल्ड रहेंगे। तो आशा तो यही करते हैं कि उसमें भी अच्छा ट्रैक्शन आना चाहिए। बट थोड़ा सा फ्यूचर्स में अंडरलाइन में अच्छा ट्रैक्शन आए, वॉल्यूम आए, उसके बाद
हम ऑप्शंस लाएं तो बेहतर है। Little bit of housekeeping before we get started. So the first 15 minutes will जी spend बिल्कुल। on introduction. सो दीपेन इज विद अस। दीपेन, देखिए क्या है, अभी काफी इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक, यू नो, क्रूड ऑयल प्राइसेस। Live stream आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन योर साइड दीपेन, आप एक बार म्यूट कर I'm unable to understand because I've just joined, and what is it that gets repeated is something that is an issue. So if you can mute yourself, I think, you know, we Yeah, can, that will be. yeah. So, you know, अभी हम लोग दीपेन, ऋषि was sharing his views कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे थे कि इंडेक्स पे ऑप्शंस, तो यू नो ऋषि इज ऑफ द व्यू कि आई थिंक थोड़ा और लिक्विडिटी बढ़े उसके बाद आए। सो कमिंग बैक टू, यू नो, अबाउट कमोडिटीज मार्केट, हम लोगों ने लास्ट देखा पेरोल नंबर्स बहुत अच्छे आए यूएस में, उसके बाद गोल्ड सिल्वर प्राइसेस या बाकी कमोडिटीज में प्रेशर देखने को मिला। एनजी बहुत बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आया। नोबडी एक्सपेक्टेड जब विंटर शुरू हुआ कि एनजी ऑलमोस्ट 200 रुपीज तक ट्रेड कर लेगा। सो दैट वाज अ ब्लैक स्वान काइंड ऑफ इवेंट व्हिच हैपेंड। Nobody was anticipating NG to fall that much. Again, crude oil prices में भी बहुत volatility देखने को मिल रहा है। Metal prices में volatility है। So depend with your kind of expertise, आप can you share your views? What's your take on gold, silver, NG, crude? I think a lot of our users have questions also on that. So before we start taking questions, आप अगर शेयर कर पाए हाउ यू सी कमोडिटीज का आउटलुक फॉर नेक्स्ट 15 डेज। जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द वेबिनार। एज यू जस्ट इंट्रोड्यूस मी के 25 साल का एक्सपीरियंस है, सो टू गिव इट अ पर्सपेक्टिव, आई हैव सीन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज ऑन एनसीडीएक्स। तो तब से मैं कमोडिटीज मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। So that has been the span of events that I have seen and the price fluctuations that I have seen in the market. अगर हम आगे 15 दिन की बात करेंगे तो काफी इम्पोर्टेंट फेज रहेगा कमोडिटी के प्राइसेस के लिए, बिकॉज बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे तो प्राइसेस लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं गोल्ड के। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो काफी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जनरली जब भी ऑल टाइम हाई से करेक्शन स्टार्ट होते हैं तो मिनिमम हमें 15% का करेक्शन देखने मिलता है। और एनजी आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि लगभग प्राइसेस आधे से भी आधे हो गए हैं। तो 750 के 350 और 350 के लगभग आधे होने आ गए हैं। तो जब भी ऑल टाइम ऐसे बुकिंग आती है प्रॉफिट बुकिंग, तो ऐसे ही करेक्शन आता है। तो आई थिंक जल्दबाजी ना करें कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए, बिकॉज सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो कमोडिटी में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है इक्विटीज के मुकाबले, कि पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है और अपने रिस्क को काफी बेहतरीन तरीके से मैनेज करके ट्रेडिंग करना है। तो ही आप कमोडिटी मार्केट्स में सर्वाइव करके थोड़ा कुछ अचीव करते हैं। सो दीपेन, यहाँ पे जैसे अभी 200 के आसपास का रेट है। सो बहुत ये कॉमन देखा जाता है कि लोगों को लगता है अरे एनजी अब 200 रुपया हो गया तो मुझे यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। जो लोग इस तरह से सोच रहे हैं उनके लिए क्या है, ऑप्शन बेटर वे है या फ्यूचर्स में जाना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि चाहे फ्यूचर्स हो चाहे ऑप्शंस हो, प्राइस में मूवमेंट बहुत जरूरी होती है, तभी आप उसमें थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी होगा क्या कि एनजी में आपने गिरावट देखी और ये वी शेप रिकवरी नहीं आएगी। आपको एक काफी साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, टाइम वाइज करेक्शन देखने मिलेगा, जिसमें प्राइसेस हो सकता है कि 6 महीने तक कुछ करे ही ना और वो 25 पॉइंट 30 पॉइंट के रेंज में ही चलते रहे। टू गिव यू पर्सपेक्टिव पे, जो हमने 700 रुपए के भाव देखे थे उसके पहले एनजी 3 साल तक 250 से 175 के रेंज में ही रहा था। मोटा मोटी वो उसके नीचे नहीं जा रहा था, उसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो आप वैसे पैसा नहीं बना पाएंगे जहाँ पे मार्केट रेंज में चल रही है। तो अगर आप एकदम एक्सट्रीम बायर ही आप है मार्केट्स में, तो ऐसे लेवल्स ढूंढे जहाँ पे आपको लगता है कि डाउनसाइड काफी रिस्क होगा, कम होगा। हमारे हिसाब से वो 180 175 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां पे आप बाई करने की कोशिश कीजिए, तो दैट आपका रिस्क लिमिटेड होगा और वहां पे थोड़ा पुल बैक भी आता है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होने की आशंका रहेगी। ये कल जो इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं दीपेन यूएस में, वो मेरे ख्याल से काफी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि अच्छे पेरोल नंबर्स के बाद अगर इन्फ्लेशन भी हाई रहता है तो ये कंसर्न जरूर क्रिएट करेगा कि फेड इतनी जल्दी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं छोड़ेगा।
सो उसका शायद नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मार्केट्स में। अगर कल इन्फ्लेशन से 6.1% के नीचे आता है, सो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कमोडिटी प्राइसेस पे फिर? देखिए, इसीलिए हम देख रहे हैं कि मार्केट्स काफी साइडवेज चल रहे हैं। आप बेस मेटल्स को छोड़ दे तो गोल्ड तो काफी रेंज में चल रहा है, बिकॉज यही नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस पे वो टिका हुआ है। हमारा मानना है कि थोड़ी और करेक्शन गोल्ड प्राइसेस में आ सकती है कंड्यूसिव नंबर्स के वजह से, और उसी में आप देखेंगे कि थोड़ी करेक्शन आएगी। तो बेटर है कि वो इवेंट हो जाने दे, नंबर्स अच्छी तरह आ जाने दे, हम स्टडी कर लेते हैं और उसी के बाद आप ट्रेड करें। थोड़ी जल्दबाजी ना करें, बिकॉज प्रेडिक्टिंग द इवेंट हैज ऑलवेज बीन रिस्की। उसमें आप एक आधा बार सही हो सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं बन पाता, तो कंसिस्टेंटली उसको आउट परफॉर्म नहीं कर पाते आप। तो इट इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग अ सिस्टम, और बेटर यही होगा कि नंबर्स के बाद ही आप ट्रेड करने की कोशिश करें। राइट, सो जस्ट टू पुट इट सिंपली, अगर अभी जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए, से अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 6.1% अगर इन्फ्लेशन, तो अगर 6% इन्फ्लेशन रेट अगर आता है तो आप किस तरह से देखते हैं प्राइस मूवमेंट, और अगर 6.1% के ऊपर आता है तो किस तरह से मूवमेंट देखते हैं? देखिए, अगर बेसिकली अगर कम इन्फ्लेशन होके आता है तो इट क्लियरली इंडिकेट्स के थोड़ा प्राइस करेक्शन आना चाहिए हमारे हिसाब से, बिकॉज इट गिव्स द स्टैंड्स के क्लियरली इनके जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आगे जाके ठीक चलेगी। तो हमारा मानना ऐसा है कि थोड़ी करेक्शन आपको देखने मिलेगी। बेटर है कि ये जब भी कम होके आते हैं उसी में आप थोड़ा पॉजिटिविटी की ढूंढे, प्राइस नीचे आते हैं उस समय बाय करने की कोशिश। ओके, तो 6.1% से नीचे अगर इन्फ्लेशन आता है तो आप ये बोल रहे हो कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? हमारे हिसाब से ये। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई थिंक हमारे काफी सारे जो अभी पार्टिसिपेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनके काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो ओवर टू यू श्रद्धा, अगर जो क्वेश्चंस है वी कैन ऑलवेज पुट इट अक्रॉस। Okay, awesome. So we have lots of questions on the YouTube live and some questions on Zoom here. So I'll quickly get started. So the first question is, what is mini commodities? So I think Rishi would be the right person to answer this. No, actually, they are not mini commodities. They are mini contracts on the same commodity. For example, in copper or so in aluminum, suppose you have a 5-ton contract. And a mini contract would be a 1-ton contract. Like existing also in gold, we have 1 kg contract, which is the main contract. Then we have a gold mini, which is 100-gram contract. Then we have a gold guinea, which is 8 gram. And then we have a gold petal, which is 1 gram. So basically various variants of the same commodity in different contracts. Yeah, thanks. I would like to add something to this to make it more simpler for the traders. आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि अगर आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और अगर आप एल्यूमिनियम का 5 MT का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपकी एक पॉइंट की मूवमेंट पे 5000 प्रॉफिट और लॉस होता है। और मिनी कॉन्ट्रैक्ट में अगर 1 टन का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके एक पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट लॉस होता है। गोल्ड में मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक पॉइंट पे 10 रुपए का प्रॉफिट लॉस होता है। 1 kg कॉन्ट्रैक्ट में आपको 100 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इस समय हर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वो एक्सचेंज ऐसे समय समय पे कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व करके इंट्रोड्यूस करता है, ताकि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप वो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर पाए और आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप उतना रिस्क ले सकें। Great, thanks Dipen. The next question is, so we have a lot of requests for Hindi also, so I'll read out the comments in Hindi for everyone. So the next question is, मैं commodity में कुछ दिन trading किया, but problem ये है कि international news on commodity कैसे analyze करें? So Dipen, आप कुछ शेयर कीजिए अपना thoughts on this. देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिसमें एक पार्ट ये होता है कि क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं, सेकंड पार्ट ये होता है कि क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी होती है वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। कमोडिटी मार्केट्स में खास करके ऐसा हमें देखने मिलता है
कि हमारे मार्केट्स क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद वो इवेंट होती है और आप मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होते हैं या गैप अप ओपन होते हैं, जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो कभी भी अगर इंडियन मार्केट में कमोडिटी में ट्रेड करना है विथ रेफरेंस एज इंटरनेशनल कमोडिटीज, तो हमेशा आप भाव को देखिए, प्राइस को देखिए एंड स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कीजिए। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट। फॉरेक्स फैक्ट्री एक काफी अच्छी वेबसाइट है, आप वहां पे जाके एक इवैल्यूएशन ले सकते हैं कि इसका क्या असर हो सकता है कमोडिटी मार्केट्स में। बट अल्टीमेटली प्राइस इज ऑलवेज द किंग, तो आप भाव को ही फॉलो कीजिए और भाव के हिसाब से ही अपना ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए। वही सबसे बेस्ट और प्रूडेंट रणनीति रहती है कमोडिटी में। So the next question we have from Mr. Narendra is asking commodity का equity और derivative पर क्या impact पड़ता है? So Rishi would like to take this. Yeah. नरेंद्र जी, कमोडिटी, इक्विटी, बॉन्ड्स, सारे मार्केट इंटर रिलेटेड है। आज यदि कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बॉन्ड के दाम, मतलब बॉन्ड मार्केट में फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड के दाम गिरते हैं, इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इनिशियली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन जब ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो शेयर मार्केट गिरने लगते हैं। तो इनका एक चक्र है जो एक दूसरे से लैग इफेक्ट में चलता है, कई बार साथ में चलता है, कई बार लैग इफेक्ट में चलता है। बट लॉन्ग टर्म इक्विटीज एंड बॉन्ड्स आर काउंटर सिक्लिकल टू कमोडिटीज। मतलब जब कमोडिटी लॉन्ग टर्म में तेजी आती है तो इक्विटी और बॉन्ड में मंदी आती है, और कमोडिटी में मंदी आती है तो इक्विटी बॉन्ड में तेजी आती है, लॉन्ग टर्म है। बट हाल में ये सारी चीज डिफाई हो रहे हैं, और हाल में ये देखा गया जब लिक्विडिटी रश था साल 2 साल पहले तक, तो सब चीजें ऊपर जा रहे थे, और अभी सब चीजें हो सकता है नीचे जाए, गोल्ड सिल्वर छोड़ के। कमोडिटीज में भी अगर आप देखें तो एक आपस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब इकोनॉमिक रिकवरी होती है तो आप देखेंगे कि बेस मेटल तेज हो जाते हैं, क्रूड तेज हो जाता है। जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होता है और जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो गोल्ड बढ़ जाता है या सिल्वर बढ़ जाता है। अब सिल्वर में खुद में भी इंडस्ट्रियल मेटल भी है और प्रेशियस मेटल भी है, तो उसमें दोनों के लक्षण रहते हैं, इसीलिए कभी तेज होता है कभी मंदा होता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है समझने को, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल। उसके बाद अगर आप समझ के कमोडिटी में काम करें ना तो इसमें आपको पकड़ बेटर आ सकती है, क्योंकि इक्विटी में हजारों इक्विटी है, यहाँ तो 8-10 कमोडिटीज है जिसको आप ठीक से स्टडी और फॉलो कर सकते हैं। जस्ट टू ऐड, ऋषि ने जो बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया, अगर किसी को कमोडिटीज का लिंकेज समझना है सो हमारा एक सब्सिडरी कंपनी है अपसर्ज, जिसमें एक कोर्स अवेलेबल है ऑन फंडामेंटल्स ऑफ कमोडिटीज। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप जरूर उसे गो थ्रू करें, तो बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा बेसिक्स एटलीस्ट के बारे में कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसका लिंकेज इक्विटीज मार्केट से कैसा है। सो हम लोग उसका लिंक शेयर कर रहे हैं इन चैट एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब, तो आप प्लीज उस लिंक के थ्रू उस कोर्स को रेफर करें, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां मिल सकते हैं। So next question is from Mr. Arnab. He's asking, what are some important economic releases or events to keep an eye on while trading crude and natural gas? So Dipen, can you please answer this? Yeah, the first thing that you have to see is that the weekly inventory data are always released for crude and natural gas. So that is what you should keep a keen eye watch on. And after that, it is always the demand supply scenario that you have to keep, because now you have to understand that more or less crude is a political tool rather than a fundamental factor driven commodity. We've just seen that Russia has announced that it might cut its production down. So it is used as a political tool whereby they can get even with the price cap that is put on them. So majorly, if the markets are if the regular trading scenario, then you could go with such inventory releases and all that. But otherwise, if there are countries which are against each other and using crude as a political commodity, then you have to just go by the news, and none of the factors will give you a clear direction.
So we have next question from Mr. Harish. He's asking that recently SEBI gave a nod for mini futures contracts. So firstly, can we expect mini contracts of crude oil and natural gas? As it appears, the approval is only for metal segments for now. So Rishi, this is for you. Sorry, can you repeat your question, please? Yes, I will. So recently SEBI gave a nod for mini futures contracts. So can we expect mini contracts of crude oil and natural gas? As it appears, the approval is only for metal segments for now. No, so the approval is not for any specific segment. They have, it's a approval is that they have, it's not even approval, it's an enabler that you can have multiple variants in any contract. Now it is up to the exchange to approach the regulator as to which contracts they want multiple variants in and the regulator to approve. So at this point, I cannot say whether what will come or not come, but I can say that yes, going forward, you will see, hopefully with regulatory approvals in place, some mini contracts. So my question to Rishi would be, if I may be allowed to ask a question, is that we had mini contracts in crude, we had mini contracts in all the base metals. Why were they discontinued in the first place? It was regulatory requirement. Okay. So the next question is, can you please explain why gold contract was designed for 8 grams instead of 10 grams, which is standard buying weight of Indians, which is 1 tola? See, during earlier in the British period also, you had a concept called the guinea. Now the gold guinea is 8 grams. And जिसको हम लोग हिंदी में गिन्नी बोलते हैं, तो जो शादी में और अच्छे त्योहारों में जो गिन्नी विन्नी देते हैं ना, तो उसको एक्चुअली इट्स द गिनी विच वी कॉल गिन्नी. तो वो 8 ग्राम का ही होता है. तो 10 ग्राम का तो बाहर अभी भी तोला सिस्टम भी कई जगह चलता है और कई जगह गिन्नी वाला भी सिस्टम चलता है 8 ग्राम का. तो जो मैन्युफैक्चर होता है गिनी और पहले भी इन सर्कुलेशन था, तो वो भी मैन्युफैक्चर होता है, इसीलिए वो गिनी कॉन्ट्रैक्ट लाया गया. नो स्पेसिफिक रीजन कि 8 ग्राम और 10 ग्राम क्यों नहीं, बट दे आर टू क्लोज टू ईच अदर, तो एक ही लाना पड़ता है, दोनों तो नहीं ला सकते. So the next question is from Mr. Prakash. He's asking, how will gold and silver react based on the inflation data? So I think we just discussed this. जैसा दीपेन ने भी बताया, से अगर एक्सपेक्टेशन 6.1% है और इन्फ्लेशन 6.1% से कम आता है, so what Dipen is expecting कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस शायद ऊपर जा सकते हैं, तो बाई करना चाहिए. और अगर इन्फ्लेशन 6.1 से ऊपर या 6.2, 6.3 आता है, तो दैट में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, राइट दीपेन? हाँ, आप भी अपना टेक दे सकते हैं, बिकॉज मार्केट्स आर ऑलवेज विद विविड व्यूज, सो बेटर है कि टेक दोनों का मिल जाए. नो, सो you are an expert into this, so I'm just updating you. Yeah. Yeah, Shraddha can move to next question. Yeah. So the next question is, can you throw some light on some recent trends in the Indian commodity markets and what impact have they had on the markets? Can you please repeat, Shraddha? Yeah. So the question is, can you please throw some light on the recent trends in the Indian commodities market and what impact they have had on the market? I mean, this is a very open-ended question. Global type of question. Yeah, but I'll try to Okay. answer this. I'll try to answer this with an Indian perspective. तो बहुत ही अच्छी तरह थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा. हम कमोडिटी मार्केट्स को बेसिकली सिर्फ एमसीएक्स सामने है, इसलिए एमसीएक्स के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सचेंज है एनसीडीएक्स में, जिसमें आप देखेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ कमोडिटीज जो इंडियन मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्री कमोडिटीज काम कर रही है, और उसी के वजह से जो हमें थोड़ा इन्फ्लेशन या प्राइस राइज देखने मिला है. तो पिछले 1 साल में हमने काफी कमोडिटीज देखी है जो एनसीडीएक्स में डीलिस्ट हो चुकी है. अगर आप देखेंगे कि 15 दिन पहले इनफैक्ट काफी फार्मर्स ने सेबी के ऑफिस के सामने धरना भी दिया था कि प्लीज इन कमोडिटीज को फिर से रिलिस्ट करें ताकि उनकी प्राइस डिस्कवरी थोड़ी और एफिशिएंट हो जाए. तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट्स का इम्पैक्ट कैसे होता है,
तो यही होता है कि प्राइस डिस्कवरी जो होती है प्लेटफॉर्म पे थोड़ी एफिशिएंट होती है, बिकॉज सभी प्रकार के लोग कमोडिटी प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करने आते हैं और उसी से प्राइस डिस्कवरी होती है, और प्राइस डिस्कवरी के चलते फार्मर्स को भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि उनको एफिशिएंट मार्केट प्राइसिंग के वजह से वो अपने ट्रेड कर सके। तो उसी पैरामीटर्स में क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके थे एक्सचेंज पे, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि प्राइसेस और फिजिकल मार्केट्स में भी बढ़ेंगे, तो उन्होंने काफी कमोडिटी को डीलिस्ट कर दी ताकि भाव बढ़ रहे ऐसे दिखे ही ना। और वो काफी बड़ा इवेंट हुआ है, और उसी की वजह से हम देखा कि फार्मर्स भी धरना दे रहे हैं, और होपफुली अभी कॉटन तो आज एमसीएक्स ने रिलिस्ट कर दिया है, होपफुली ऐसी और भी कमोडिटीज फिर से आपको ट्रेडिंग में देखने मिलेगी। So the next question is, what are the opportunities for foreign investors in the Indian commodities market, and how can they participate in the market through MCX? And if they come, will the volumes and liquidity be same as NSE? You cannot compare any two exchanges. However, having said that, SEBI has allowed FPIs to participate in the Indian commodity markets. The exchange is now studying that and will come out with a detailed circular as to how and when they can participate. अब FPIs जब आएंगे तो naturally कोई भी participant बड़ा आता है मार्केट में, तो liquidity और depth तो बढ़ती है। तो मार्केट में लिक्विडिटी और डेप्थ तो बढ़ेगी, अब कितने किस स्तर तक बढ़ेगी, कितना बढ़ेगा, किस हद तक बढ़ेगा, वो बोलना मुश्किल है। और अभी कोई उस पर बंधन नहीं है, बस हम इनेबलिंग प्रोविजन लाएंगे तो एफपीआईज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So the next question is, what are the factors that impact the price of crude oil, and how can one anticipate the price changes? So Dipen, please. See, that is the entire game, no, isn't it? You would want to anticipate the price change in the direction of falling or buying, and that is how you would want to make money. So, as I just mentioned, that the factors earlier for crude oil were clear demand and supply, but it also depends on what are the surrounding circumstances. Like, for example, in Corona period, we had seen that there would not be any demand for crude oil, and we had in fact seen that the prices had gone down to negative, which has just happened second time in the history of mankind. So ऐसा भी हो सकता है, अभी जब से क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट या कोरोना ओपन हुआ है, since the time it is opened, we are seeing that there is a demand revival, and then the prices have again also reached an all-time high on MCX. You've just recently, as I mentioned, that after the war has broke out, there have been a lot of price caps against Russia. So they have decided to cut down on production, and that will help them to increase the price. So there are a lot of factors that keep on changing, evolving, and accordingly you have to adapt. So there is no one set of factors that we can clearly determine to identify the price change. You have to be very dynamic and very understanding of what is happening around the world, and then accordingly make your decision, and hopefully keep on attending such webinars so that you can be abreast with the current market scenarios and take your decisions. So the next question is, how can I as a beginner start trading commodities with a small capital? As I said earlier, as a beginner, the best way to start with a small capital is to try and look at either mini futures or options where you buy the call or the put, and thereafter you once you get the hang of that trading, then if you want you can ramp it up. But before that also you should come with the adequate knowledge and study. Otherwise, whether you do small or big, the chances are you will burn your fingers. So the next question is, what are the resources and tools available for traders to improve their knowledge and understanding of the commodities market? JP? Yeah. So one tool I already mentioned, that there is a course on fundamentals of commodities market. The link I have shared in the chat, so you can refer that. The second way of looking at it is there is a course of NISM, which gives you a good perspective on how the basics of commodities work, at least in India. And the third and the most practical approach is, you need to, if you want to learn swimming, you have to jump in the swimming pool, right? So start with the smallest capital, track
how the market behaves. As Rishi rightly mentioned, that never start with a large capital in large contracts. Always start with some mini contracts. Analyze how the price movement happens, because once you have skin in the game, आप अगर किसी चीज में पैसे डाले हो ना, तो आपका अटेंशन ज्यादा होता है. सो आप हर माइन्यूट डिटेल्स को स्टडी करोगे. आप किस तरह से न्यूज या टेक्निकल्स देखने के बाद प्राइस में मूवमेंट आता है वो आप ट्रैक करोगे. और इट्स अ जर्नी. आप एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो. आपको कुछ मंथ स्पेंड करने पड़ेंगे जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट. So that's the right way to start. But as rightly said, start with a knowledge. Just don't jump into it. And there are resources available to learn. उसे आप follow कीजिए. पहले आप समझिए कि ये concept क्या होता है, और फिर then you should start small. So we have one last question. So as a beginner, what should I start with? Which commodities should I start trading? See, ideally, whenever you start trading, it depends on your risk profile, your time horizon, your understanding of the market and everything. So it's, one size fits all approach never works. Having said that, एज वी डिस्कस्ड, आप छोटा स्टार्ट करें, या तो कॉल पुट खरीद के या फ्यूचर करके. अब फ्यूचर में जहां पे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हो वहीं पे देख सकते हैं. तो आज के दिन तो गोल्ड और सिल्वर में ही छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स है. इनफैक्ट गोल्ड में तो 1 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट है जो लगभग 5,500 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है. तो उसमें आपका लॉस प्रॉफिट ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है. प्लस आप ऐसा कमोडिटी चूज करें जिसमें वॉलिटिलिटी कम हो, तो आपको फिर मूवमेंट भी कम आएगा, तो गेन भी कम आएगा, लॉस भी कम आएगा, बट एटलीस्ट समझ बेटर आएगी. तो आप उस तरह से देख के स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आप वॉलेटाइल कमोडिटीज में जाएंगे तो फिर नेचुरली गेन भी ज्यादा हो सकता है, लॉस भी ज्यादा हो सकता है. The next and the last question is, if I want to get started with trading, do I need to do equity trading first and only then move to commodities, or can I directly start trading commodities? ऐसी कोई बात नहीं है. मतलब दे ऑल डिफरेंट एसेट क्लासेस. आप करेंसी अलग से कर सकते हैं, इक्विटी अलग से कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर अलग से कर सकते हैं, कमोडिटी अलग से कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आपको एक जानने से ही आप दूसरा कर सकते हैं. दे आर ऑल, दो दे आर इंटर रिलेटेड, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. All right, I think we are done with most of the questions. Thank you so much, Rishi sir and Dipen sir, for your time today. And thank you, audience, for being patient with us. And apologies for the small glitch that we had towards the start. But we will keep doing more of these webinars for the commodity trading markets and generally what's happening and how you can become a better trader. So stay tuned on our socials. And also, if you have any more questions, please feel free to drop them on our community, which is at community.dhan.co, and we'll have the experts answer them for you. Thank you so much, Shraddha. Thank you so Thanks. very much. Thank you. Dipen. Thank you. Thank you, JP. Thank you. Thank you, Dipen and Shraddha. Thank you very much. Thank you.